Good morning students, how are you? I hope you are safe at your home. So today I explain a new topic, that is ways to behave, and we learn today chapter number 5. This is our first video of chapter number 5. As we all know that we should learn good manners. So where do we learn good manners? Can you tell me? Do you know? Okay, I will say we should learn good manners at home and in school. So what is the meaning of manners? So मैनर्स मीन्स अ वे ऑफ डूइंग. जो भी आप करते हो वो किस तरीके से करते हो, अच्छे तरीके से करते हो, दैट इज़ कॉल्ड गुड मैनर्स. अगर आप वही काम किसी गलत तरीके से करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैड मैनर्स, राइट? सो टुडे वी विल लर्न गुड मैनर्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनर्स? मैनर्स, as we know कि manners is very important for us. Do you know why? Because it shows us behavior, कि हम किस तरीके से बोलते हैं, हम किस तरीके से behave करते हैं. Then how should you follow some things that we have to learn. Nobody can learn गुड मैनर्स बाय बर्थ. कोई भी इंसान जन्मते ही, स्मॉल बेबी जो होता है वो जन्मते ही, बॉर्न होते ही गुड मैनर्स या बैड मैनर्स वो उसको पता ही नहीं होता है. व्हेन वी बिकम 3 or 4 years, that time our parents at home learn good habits, right? That is called good manners, and we learn some good habits from our home also. When you become 4 or 5 years, that time you will come in the school, and there your teachers will learn what is good manners. So this way we learn good manners and good things in school and at home, right? So here are some good manners that I got on the board. The main thing is nobody can like the ill-mannered person. What is the meaning of ill-mannered person now? So ill-mannered मतलब having bad manners. जिसको bad manners होते हैं जिसमें, that person is called ill-mannered person. Do you know how? Suppose your elders give you some work and directly you say no, I am not doing this. अगर आपके बड़े आपको कुछ काम बोलते हैं और आप सामने से मना कर दोगे, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, that is called ill mannered. So do not get ill mannered but become mannered child. जो बच्चे हैं उन्हें manners होना ही चाहिए. So here I mention some good manners that you should follow everywhere. कहीं भी आप जाओ ये आप फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट वन, ग्रीट ईच अदर. जब आप स्कूल में या घर पे या कहीं और जगह पे किसी से मिलते हैं, सुबह में फर्स्ट टाइम जब आप मिलते हो तो सर गुड मॉर्निंग कहते हो, या तो फिर आप कहते हैं हाउ आर यू, इस तरीके से पूछते हैं. और जनरली आप बोलते हैं हेलो. दिस वे यू से with each other, right? First time when we meet in a day someone, we say hello, good morning, how are you. So these are some words which shows your manners, how you speak with the person or how you do some activities with some persons or with every person, right? So this is our first manners, that we greet each other when we meet someone in the
स्कूल और एट होम, सुबह आप जल्दी उठ के यू शुड ग्रीट योर पेरेंट्स, से ममा गुड मॉर्निंग, से हाउ आर यू, इस तरीके से नॉर्मली हम बोलते हैं, राइट। व्हेन यू गो एट योर होम और यू लीव दैट प्लेस, दैट टाइम यू शुड से गुड बाय। जनरली क्या बोला जाता है? गुड बाय। या तो इवनिंग हो तो गुड इवनिंग, गुड नाइट, दैट टाइम यू शुड शो योर मैनर्स। इस तरीके से आप अपने मैनर्स बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड गुड मैनर। जब आप रात को सोने जाते हैं, व्हेन यू गो टू स्लीप अर्ली इन द नाइट, दैट टाइम you should greet your parents, your friends, your brothers, sisters, say good night every time. And second, and this you have to speak politely, don't speak rudely. Politely मतलब एकदम शांति से और प्यार से बोलना चाहिए आपको कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें, these all things which shows our manners, ये हमारा क्या बताता है? मैनर। On the other hand, the ill-mannered person, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ill-mannered person मतलब having bad manners. The ill-mannered person do not show its manners, his or her manners. Do you know how? I'll show you one example. That one boy wake up early in the morning and without greet his parents, he take his bag and going outside for doing some work. So it shows his rude behavior. So this is bad manners. Don't show your rude behavior to anyone, right? Show your polite speech or speak politely. Help others and say may I help you. This way आप कुछ manners बता सकते हैं. And first greet each other, that is I explain. Now second one, use the magic words. What is the magic words? कौन से मैजिक वर्ड्स हैं? थैंक यू, देन वेलकम, सॉरी, प्लीज, right? So these some words are magic words. For example, thank you, welcome, sorry, please. When should you say thank you? When you want something, right? जब आपको when you get something from others, that time you say thank you. आपको किसी से कोई आपको अगर कुछ देता है एज अ गिफ्ट या कोई भी चीज़ खाने के लिए, that time you should say thank you. What you should do? What you do? Say thank you when you get something from others, and or when you give something to you and someone says to you thank you, that time what should you speak? वेलकम. क्या बोलना चाहिए? वेलकम. अगर आप किसी को कुछ चीज़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू गिव योर सम बुक्स टू योर फ्रेंड्स एंड दैट टाइम योर फ्रेंड सेज टू यू थैंक यू, दैट टाइम यू शुड से वेलकम. अगर आपकी कुछ बुक्स, आपका फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो आपका फ्रेंड अगर उसको कुछ बुक्स चाहिए, दैट टाइम you must give your books to your friends, and that time if your friend says to you thank you, that time you reply welcome, right? Now second word, please. When do we use please word? Can you tell me? Do you know? Okay, I will say when you do some mistake or when did you some mistake, that time you say sorry. Or when you hurt someone, that time you say
सॉरी, राइट। जब आप किसी को हर्ट करते हैं तो आप क्या बोलोगे? सॉरी। एंड यू इफ़ यू वांट समथिंग, किसी के पास से अगर आपको कुछ चाहिए तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़। आपको कुछ कहना है, बिफोर यू कंप्लीट योर सेंटेंस और बिफोर यू स्टार्ट योर सेंटेंस यू सेज प्लीज़, then you complete your sentence. For example, if I says my name is, sorry, if I say someone when that person busy in talking and I want something from that person, that time I will say please excuse me please, and then I will start my conversation. conversation मतलब बातें करना, जो मुझे जो कहना है, that person, उस इंसान से मुझे कुछ कहना हो, that time I say please, and then I will start my sentence or my conversation with that person, right? So these magical words you have to say, that is called good manners. The magic words are thank you, welcome, sorry, please. These are called magic words. Is it? Good. Now respect elders. Sorry, before that, greet or use the magic words. I say to you one incident. When you shake your hands with your friends, do you know this matter come from? कहाँ से ये स्टार्ट हुई? This process started from England to make sure that no one had any weapons. ये जो शेक हैंड करने की, आप हाथ मिलाने की जो प्रोसीजर थी वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई, ये चेक करने के लिए कि जो इंसान शेक हैंड कर रहा है, हाथ मिला रहा है, उसके हाथ में कोई हथियार तो नहीं है। वेपन मतलब हथियार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपन? वेपन मतलब हथियार। ओके, सो दिस वे यू शुड शो योर गुड मैनर्स टू द person, right? Now I will send some spellings with this video that you have to write in your notebook of EVS. Mention chapter number 5, ways to behave, and write there some spellings for first video, and in the next video we will do more, and you have to, I will explain more good manners that you have to learn or you should follow at everywhere, right? So be safe, and please parents help your child to write or check these words or spelling with your child and complete this work in their EVS notebook of 4 lines. Thank you. Have a nice day and be safe.